Assalamu everyone, and welcome to the second episode of Let's Talk Pakistan, a podcast where we discuss everything from global issues to tech updates. Today we have with us Ms. Hiba Imran, who has majored in psychology. She is a rapid transformation therapy professional and an eating psychology coach, as well as a certified nutritionist. She helps people in emotional healing, which is something a lot of us can use today. So, Hiba, welcome to the show, first of all. और सबसे पहले तो मैं आपसे ये अस्सलाम पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज में मुझे समझाएं कि आप ये जो आप मैंने टेक्निकल वर्ड्स बोल रहे हैं जिस तरह रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी, उसके बाद उसके बाद ईटिंग साइकोलॉजी, ठीक है, दीज आर सम थिंग्स जो पाकिस्तानी सोसाइटी डज नॉट अंडरस्टैंड रियली वेल। और आज आप आई हैं तो हमें थोड़ा सा आप शुरू में थोड़ा सा इस पे तारुफ करें कि ये होती क्या है बेसिकली। So first of all, thank you for having me here. I love actually ये मेरे लिए काफी अच्छी opportunity है क्योंकि a lot of people जैसे आपने भी बोला कि they don't understand what this is, what I do. तो ऐसे लोगों को इन podcast के through लोगों को फिर चीजें बहुत अच्छे से समझ आने लगती हैं because we get to go into detail. So I help people heal emotionally, physical जो उनकी चीजें चल रही होती हैं, ailments, बीमारियां वगैरह, वो उसके पीछे जो mental connections होते हैं या emotional connections होते हैं, उनको heal करना. ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन वगैरह के बारे में पता है, एंजाइटी के बारे में पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आती कहाँ से हैं, होती क्यों हैं और इनके साथ डील कैसे करना है. आज I wanted to talk about stress mostly because I think it's a big topic, it's a very broad topic, लेकिन it's such an important topic और बहुत सारे लोग इस पे relate कर सकते होंगे, I'm pretty sure. So that's what I wanted to go into. लेकिन to mention, rapid transformational therapy is basically a revolutionary type of therapy जो अब पाकिस्तान में introduced हो रही है, and I'm probably one of the first few people who are doing it. That's amazing. Also, yeah. लेकिन एक दफा लोगों को पता चलेगा इसके बारे में, they're gonna be amazed क्योंकि it's such a interesting thing कि आपका दिमाग इतना पावरफुल है, आपका माइंड जो है it holds so much. मतलब आपको अपने बचपन से कुछ याद हो या ना हो, इवन आपकी बॉडी को याद होता है. तो बहुत दफा जो हम लोग बीमारियां जो हमारे आती हैं पहले ना हो लेकिन आगे जाके हो, लेकिन हम एक्सटर्नल चीजों पे फोकस करने लग जाते हैं कि अच्छा मेरे लाइफस्टाइल में क्या गलत है, मेरे ये क्या गलत है, उसकी वजह से वो कहते हैं कि अच्छा मैं डाइट को बदल लेता हूँ या मैं दवाइयां खाने लग जाता हूँ या मेरे साथ ये हादसा हो गया इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है. But they don't understand कि a lot of times everything connects back to their childhood. Oh, yeah. तो मेरे जैसे लोगों का काम यह है कि फिगर आउट करना कि अगर आप किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे लिंक क्या है. Okay. I hope that's understandable. Yeah, it is actually because like I don't know, I've not studied a lot of psychology. I just had one subject in bachelor's जो वो like that is mandatory for every BSc student to actually study. तो उसके अंदर वो था कि how there are stages of formation बचपन में, ठीक है, how everything is related to psychology and how we grow up and how people act. और now it's very common कि even the people who have deranged, ठीक है, और जो भी सारा होता है, मतलब कि who are mentally challenged, that's a result of something that's happened in their childhood. मुझे professionally तो नहीं पता, but I've seen it a lot in a lot of American movies, right? Nowadays there a lot of them refer to this very concept. Yes. हाँ, लेकिन असल में मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात करो पाकिस्तान में तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कुछ ऐसी चीज होगी जो नजर आने वाली होगी, बहुत बंदा पागल होगा तो इसका मतलब है उसको जरूरत है इस मदद की. लेकिन I just want to put it out there कि जरूरी नहीं है आप पागल हो थेरेपी लेने के लिए. बहुत छोटी छोटी चीजों से आपको मतलब
नुकसान काउंसलिंग पहुंच रहा चाहिए हो थी क्या? सकता है, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को एडिक्शंस पता है कि अच्छा स्मोकिंग एडिक्शन होती है, बहुत सारी एडिक्शंस होती हैं, लेकिन हमारे माशरे में खाने की एडिक्शन इतनी ज्यादा है, यस, लेकिन हम उसको एडिक्शन नहीं बोलते हैं। स्पेशली पंजाब में। um, मतलब या आई एम फ्रॉम पंजाब, सो आई एम गोइंग टू से या पंजाब में, ठीक है। हाँ या तो अब मैं ये नहीं कह रही कि लाइक खाना पीना एंजॉय नहीं करना चाहिए ये वो, लेकिन बहुत सारे लोगों को असल में मसला है, लाइक उनसे um, वो आउट ऑफ कंट्रोल खाने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि मतलब या आई गेट मेरे इट। साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं लाइक वो they're eating but they're not actually experiencing the food, for example, right? आप वहां हो लेकिन आप वहां नहीं हो। आप बहुत सारी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हैं जो आते हैं उनको हम जी नहीं रहे हैं, we're बिल्कुल। basically somewhere else। तो ये एक चीज है जो जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत आई, सारे लोगों को yeah, I know of this one eating disorder. Basically these are eating disorders, right? So जी आपने addiction की बात की, but like I'm taking it one step further. Eating disorders, even they are not very common in Pakistani society, right? जिस तरह bulimia है, हम्म what you're talking about, ठीक है, कि overeating, or it's a lot, it's a very talked about topic in West, और मेडिसिन में काफी ज्यादा बात होती है, बट पाकिस्तानी सोसाइटी में आई डोंट थिंक बुलिमिया इज समथिंग व्हिच इज वो पाकिस्तानी सोसाइटी में शायद है, खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो या सो सेकेंडली, ओके, सो कमिंग बैक टू द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी का तो हमें पता है सबको कि एवरी व्हाट इज लाइक रैपिड क्या है इसमें, क्योंकि जिस तरह that's a मुझे really good question। जिस तरह मुझे पता है कि रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी इज जस्ट अ रेगुलर थेरेपी विच इट्स लिटिल स्पेड अप, राइट, जिसमें बेसिकली आपने बात की पास्ट की ना, कि बचपन के फॉर्मेटिव ईयर्स में किस तरह मसाइल आते हैं बच्चों के, ठीक है, तो पर्टिकुलरली यू टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड ट्रॉमास और वो सारा कुछ, ठीक है। तो लाइक इज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी लाइक कि आप फर्स्ट दिन गए हो पहले सेशन में, यू लाइक टैकल a lot of things which would have not been covered in regular session, इस तरह है? अच्छा तो well this is not like typical therapy जो आप जाते हो, एक सेशन लेते हो, फिर अगले हफ्ते फिर जाते हो, फिर या तो हर Yeah, महीने रेगुलरली जा रहे होते हो कुछ सालों तक, और 1 घंटे आप जाते हो उनके पास बैठ के अपनी प्रॉब्लम सुनाते हो, बात करते हो, दैट्स टिपिकल। दैट कैन आल्सो हेल्प, लेकिन दैट्स अ स्लो प्रोग्रेस। yes, What rapid transformational therapy is, it combines different things, different principles, जैसे neuro principles, then there's the hypnotherapy, and then yeah, yeah, CBT, और ऐसे different different therapies को combine करके it delivers yep, rapid results, as in सिर्फ आपको एक सेशन या 2 या 3 सेशंस के लिए आना पड़ेगा, और उसमें हम प्रॉब्लम का पता निकाल देते हैं, आपके जो पीछे बैठी हुई होती है yeah, रूट कॉज। traumas, yeah, हाँ तो वो पता चल जाती है जब, तो फिर उसके बाद बाकी जो हीलिंग होता है ना वो आसान हो जाता है, बिकॉज यू आर मेड टू हील, यू आर मेड टू इवॉल्व, यू आर मेड टू इम्प्रूव। आपकी बॉडी आपका माइंड खुद ब खुद हीलिंग के उसमें लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें स्टॉप कर रही होती हैं। हम बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी चीजों को, लेकिन बहुत दफा अंदर एक चीज बैठी हुई होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही होती, हमें सही नहीं होने दे रही होती, हमें कॉन्स्टेंटली उसी साइकिल पे चलाती रहती है, चलाती रहती है, चलाती रहती है। yep, तो दैट्स द थिंग कि हमें सबसे पहले तो ये पकड़ना है कि आपको ब्लॉक क्या कर रहा है, perfect। आपकी लिमिट क्या, हाँ लिमिटेशन क्या है, वो चीज पकड़ के हम हटा देंगे, उसको दूर कर देंगे, तो फिर उस खुद ब खुद लाइक So you're यू नो talking एक about फ्लो mental बन blocks, जाता है। mental blocks, basically you या remove them and then मेंटल ब्लॉक्स। it helps them them people reach a certain point जो trauma है, ठीक है, it helps them reach them faster and then you cure that particular trauma or like, yeah,
एग्जैक्टली लेकिन Yeah. द थिंग इज यहाँ पर लोगों को लगता है कि ट्रॉमा भी एक कोई बहुत बड़ी It's सीरियस very चीज है stigmatized. Everything in या Pakistan is वेरी tabooed and very stigmatized. ठीक है. जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता ही होगा, बल्कि यू आर प्रोफेशनल योरसेल्फ, पाकिस्तान में कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो सर्वेज आते हैं, ठीक है, बट in a recent study from 2020, I guess, from Aga Khan University, बल्कि I have it open here somewhere, उसमें उन्होंने कहा है कि 3 out of 4 Pakistanis are suffering from moderate or high levels of stress, ठीक है, during the pandemic, ठीक है, और 1 in 3, ठीक है, is suffering from high levels of stress, ठीक है, और severe anxiety, ठीक है, जो which are like things that जो स्टिग्मेटाइज्ड है, ठीक है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है, आपके आपके प्रोग्राम्स नहीं बात करते, टीवी चैनल्स नहीं बात करे, मेन स्ट्रीम मीडिया, बिकॉज दे हैव दिस रेटिंग इशू, ठीक है, वो उससे डरते हैं, ठीक है, उसके बाद लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू इग्नोर सच थिंग्स और उनको बरी बरी करते जाते हैं, ठीक है, ट्रॉमास को, ठीक है, और बाद में दे क्रिएट प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिस तरह जो हमारे टीवी शोज में भी काफ़ी यानी कि दिखाए जाते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, सो आई बिलीव इवन फॉर एग्जांपल आई हैव मेट पीपल इन माय लाइफ, लाइक स्टूडेंट लाइफ में, पीपल हु needed therapy and they wouldn't accept going there just for the sake of the stigma that's attached to the problem, right? But those who did, they actually benefited from it. So there is a case, there's actually evidence from all around the world, but even in my own life, okay, I've seen people get better from therapy. But आप बताएं कि you see people coming to you, and how are people like, is this changing in Pakistan? Is therapy, going to therapy, becoming less stigmatized or not? सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आर यू आस्किंग के बदलाव आ रहा है पाकिस्तान में एग्जैक्टली थेरेपी मैं ये जाने पूछ से रहा हूँ या कि पाकिस्तान की सोसाइटी में, थिंकिंग में, ये चीज़ लेस स्टिग्मेटाइज हो रही है कि नहीं? या आई फील लाइक अब क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू इतनी ज्यादा अवेयरनेस इतनी तेजी से फैल रही है और हमारे जो यंगस्टर्स हैं देर मोर अटून टू दीज थिंग्स देर पिकिंग थिंग्स अप फ्रॉम द वेस्ट रियली क्विकली तो ये सारा कुछ तो एज यू सेड वहां पर बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में बातचीत होती रहती है तो आई थिंक आगे जो न्यूअर जनरेशंस हैं it's easier for them to understand all of this stuff या लेकिन बिकॉज वो ये कि जो older generations है ना अभी तक जैसे आपने बोला चीजों को सप्रेस करना पुश अवे करना एग्जैक्टली, इवन अगर रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट आ रही है ना चुप हो जाना बिल्कुल उसके बारे में बात नहीं करना कि बस वो एक ऊपर ऊपर से एक ना पीस रखना एक या कि ना ऊपर से लगे सब ठीक है सब अच्छा है या ये तो कितनी अच्छी रिलेशनशिप है लेकिन अंदर इतना इतना टॉक्सिसिटी और डिस्ट्रक्टिव एक एनवायरनमेंट अंदर का होता है कि वो फिर एक बीमारी बन के आता है या मेंटल डिजीज या बहुत सारी चीजें ऐसे मैं इसी की बात कर रही हूँ कि ज्यादातर यू डोंट हैव टू लुक पागल टू बी या suffering you can anyone just can be be, right? There's a yeah high, we've got a lot of problems, right? अभी आपका high level of stress है, ठीक है, we've got Mhm. high unemployment in Pakistan, ठीक है, आपके बिजली खाना सब कुछ महंगा हो रहा है, ठीक है, even I remember a friend of mine who is in one of the state institutions, ठीक है, very famous, very mainstream state institutions, वो वहाँ पे बता रहे थे कि even in our military, ठीक है, PTSD is something that is like it's not very relevant, ठीक है, and वो भी है, ठीक है, even I had recent workshop with UN, ठीक है, वहाँ पे बलूचिस्तान के कुछ representatives आए हुए थे, so they're like, our problem is not education, it's not health, ठीक है, अभी कहते हैं कि our बच्चे, वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कि who are coming from those war ridden areas, ठीक है, they do not have those PTSD की कोई उनके पास फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, सो वी आर नॉट एबल टू मेन स्ट्रीम अ होल जनरेशन, राइट? और उससे आप सोचें कि कितना ह्यूमन कैपिटल, जो आई एम सॉरी टू पोलिटिसाइज अ लिटिल बिट,
but I think this is a topic which is a national topic, or it needs to talk about on various levels, right? So मतलब कि वो she was that woman was like because this conference was on education, so everyone was like a Balochistan education, education, education. So she was a worker over there, health worker, जो free field में काम करती है. So she's like, no, we don't need all of that. We don't need new hospitals. We just want you to provide us with these MPHSS. I don't know if I'm spelling it right. It was something mental, physical, health. MPHSS was something a department. They thought she said that that's what people need over there. It's not वो जो हम जो समझते हैं जो ज़रूरियात हैं. So that is being ignored. मेरे कहने का मकसद है like if you start topping off things, ठीक है, इतनी problems हैं, and unlike हम भी बाकी दुनिया की तरह इंसान ही है, ठीक है. Obviously we are stressed, ठीक है. Obviously there is anxiety when there people are unemployed, or obviously people have anxiety when they are uh, not underpaid, or their skills are not being appreciated, ठीक है, or there's a lot of issues within the houses, right? और इतना कुछ households में हो रहा है, उसके बाहर हो रहा है, तो obviously you're right कि stress के issues Yeah, तो बहुत सबसे ज़्यादा हैं. बड़ी चीज, yeah, exactly. Sorry to cut you there, No, but it's okay. सबसे बड़ी चीज which I noticed is बहुत सारी चीजें which I have noticed, लेकिन एक तो ये कि अगर हम लोग अपनी mental health को नहीं ठीक करते ना, तो we hurt our children so much. Yep. Like this, I'm really passionate about this topic क्योंकि I think You can अगर rant all you future को want, it's बदलना है okay. ना, it starts with your kid. Yeah, And if you can raise your kid mentally healthy, emotionally healthy, and stable, so you just created a huge impact in the world right there. yep, you save Yeah, generations. yeah. And you, हमको लग रहा था कि हाँ प्यार से हम लोग कर लेते हैं, प्यार से कर लेते हैं, लेकिन people don't know the difference कि अच्छा Yep. प्यार से communicate ऐसे करें कैसे कि हम लोग अपनी लिमिट भी बनाएं Yep. बच्चे के साथ, उसको इतनी ज्यादा छूट भी ना दे, but at the same time you know, I can understand the child, I can empathize with the child, मतलब मैं Yep. उसकी emotions समझ सकूं without giving in to them. तो Yep. ये छोटे छोटे subtle differences ये हमें like सीखने इतने जरूरी हैं कि अपने पार्टनर के साथ communicate कैसे करना है, अपने बच्चों के साथ communicate कैसे करना है. तो सिर्फ like oh, अपने साथ कैसे communicate करना है, Yeah, that's a big one. that was exactly what I was thinking. Okay, yeah, there's something about, Yeah, because a lot yeah, of people don't realize that they have this problem, right? Because yeah, they उनको don't. लगता है, They're like yeah, सब yeah, ठीक ही चल रहा है बस हाँ, like, yeah, हम हाँ, हाँ. और Even like people don't want to admit कि like मेरे माँ बाप ने जैसे मुझे रेज करा है, सब वो ये कहेंगे कि मेरे माँ बाप सबसे अच्छे हैं, you know, सब like, and I agree, parents are amazing, लेकिन बहुत सारे ऐसे like patterns हैं जो भर problematic दिए गए हैं households हैं. बच्चों में. Yep. Problematic, yeah, just like not knowing how to deal with stress. Yes, Problems तो सबकी जिंदगी में आएंगी, लेकिन how you handle that, how you react to that, that determines your emotional intelligence. ये exactly. सारा कुछ आपको जिंदगी से डील करना कैसे है. जो मेंटली कमजोर होगा बंदा, उसके लिए छोटी सी प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी पहाड़ जैसी लगेगी, और जो मेंटली स्ट्रांग होगा उसके लिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी है, उसको कुछ नहीं लगेगी, वो उसको पता होगा कि अच्छा मैंने इसके साथ रिस्पॉन्ड कैसे करना है. So Yep. that's another thing like Yeah, another there's so reason, many things. I don't know, I believe, ये मेरा personal opinion है, it might be wrong, that Pakistani society does not have a lot of outlets. For example, in our parents' age, there used to be festivals जो बाहर बहुत ज़्यादा होते हैं अभी भी, ठीक है. There used to be so many outdoor activities जो कि because we're talking about the pandemic, ठीक है, post 2020 world में, we do not, the outdoor activities are limiting themselves, ठीक है. Work from home है, ठीक है, you can't go out to parks, yeah, outing is limited, travel is limited, ठीक है. There are so many medical uh,
like there's so many medical bills that are stacking up in people's homes, right? I just got my booster shot, so like um, it's there are some costs to these pandemic as well, because people are getting infected every day in Pakistan, as Omicron is becoming a major virus again in Pakistan. It's spreading. ठीक है? So I believe ये भी बहुत ज़्यादा frustration है कि people are not getting out, there are not a lot of outlets. Kids की development, for example, kids are studying from home, right? And they're not able to go to school, और वो घर पे बैठे हुए हैं पूरा दिन, और लाइक उनकी जो एक होती है the social bonding that we had, I personally had growing up, going to school every day, meeting my friends, they're lacking upon that. So I believe now more than ever, stress is something that needs to be mainstreamed into the society. Or we don't know how the pandemic is going to end, or if it is going to end, right? Or this is the new way of life. So I believe these things, the stress, the therapies, the having so like everyone has their own dentist, everyone has their own physical health specialist, etc., etc., right? And so I believe, in addition to that, a life fitness coach, or a professional and certified uh, mental health psychologist, professional. psychiatrist, yeah, mental health professional, and an eating coach, because we're staying at home all day, and we're stacking up together, we're eating so much, and we're barely working out with all the gyms closing in and closing and opening and opening, closing again and again. And I mean, there are a bundle of problems that are being thrown at us these days. Okay? So Actually, yeah, the thing is, sorry to cut you again, yeah, it's okay. but It's okay. you're making such a great point. I just wanted to add to that कि आप बात कर रहे हो ना कि हम फिजिकल चीजों के लिए तो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हर चीज है, Exactly. डेंटिस्ट हैं, हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, सब कुछ है, Exactly. इवन जिम्स हैं, डाइटिशियंस हैं, लेकिन आप अगर आप सिर्फ थोड़ी देर एक सेकंड लेके सोचो कि आपकी जो दिमाग में जो चीजें चल रही होती है ना, जो सोचें यहाँ चल रही होती हैं, उसका कितना बड़ा असर आपकी Exactly. बॉडी पे होता है. आई कैन एक्चुअली गिव यू एन एक्टिविटी राइट नाउ, an Okay. activity, an exercise. अभी मैं आपको करवा सकती हूँ. If you just close your eyes Okay. to build that mental health, I mean mental and body connection. Okay. Perfect. Just close your eyes and आप तसव्वुर करो कि आप फ्रिज खोल रहे हो, उसमें से आप एक लेमन उठा रहे हो, and it's like a really fresh lemon, very juicy lemon, और आप लेके जाते हो, उसको धोते हो सिंक में, आप कटिंग बोर्ड लेते हो, उसको कटिंग बोर्ड पे रखते हो, आप छुरी उठाते हो, उसको बीच में से काटते हो, and you can smell the juice of the lemon. आप उस एक पीस उठाते हो उसका, you bring it close to your mouth and you smell it, खट्टी खट्टी smell आती है, and you drip it into your mouth on your tongue, squeeze it and swallow the juice. How does that feel in your body? Feels amazing. It feels amazing. What did you Yeah, feel in your mouth? I actually went there for a little bit. Um, and Did your yeah, salivary glands yeah, activate? yeah. मतलब आपको यहाँ खट्टा feel हुआ? Exactly, Like exactly. that's exactly, क्योंकि even सिर्फ एक picture बना, दिमाग में हमने एक picture बनाई है और फौरन हमारी body react कर रही है, Yep. right? तो हम लोग कॉन्स्टेंटली रोजाना इतनी पिक्चर्स बना रहे होते हैं दिमाग में कि अब ये हो जाएगा, अब मेरे साथ ये हो जाएगा, ऐसे ना खौफ वाली जिंदगी गुजारने लग जाता है, स्पेशली विद द पेंडेमिक के बाहर निकलने से डरने लग गए लोग. क्यों, आई नो ना एवरीबडी इज लाइक दैट स्पेशली इन पाकिस्तान, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो एकदम से खौफजदा हो जाते हैं, वो ये पिक्चर्स बनाने लग जाते हैं कि यू नो ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा. तो नॉट इवन इन विद हेल्थ, लेकिन जैसे अगर गुर्बत है तो कोई गरीब बंदा है,
अब वो ये पिक्चर बनाता रहेगा कि उसकी जो लाइफ दिख रही होगी ना उसकी आंखों के सामने, वो गुर्बत वाली होगी, वो Yeah, the near future doesn't जॉब seem that में much bright. देख Yeah. रहा होगा अपने आप को, या वही मिजरी, वही टेंशन, वही चीज, इट कीप्स सर्कुलेटिंग, जैसे मैंने पहले बोला था, जिस साइकिल में हम लोग होते हैं, दैट कीप्स अस इन दैट साइकिल, जब तक आप एक लूप होल ना ढूंढो और अपने आप को उस चीज में से निकाल ना लो, उस साइकिल में से, तो जब तक आप उसी में चलते रहते हो। तो एक दफा आपने अपने यहाँ पर मेंटल इमेज, अपने ये जो अंदर चीजें चल रही हैं वो बदल ली ना, तो खुद ब खुद क्या आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी, Yep. उसके हिसाब से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। Perfect. So this is another one. So rapid transformational therapy is not just for mental health or emotional health. This is for if you want to find love, if you want to become confident, if you want to become a leader, if you want to get rich, That one, that क्योंकि one, a हर lot of चीज के people. blocks होते हैं. That's a good selling There, point. yeah, we have money blocks. For example, अगर मैं यही सोचती रहूंगी कि अमीर लोग तो बहुत वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक अल्फाज दें अच्छा, आप मुझे, basically I negative don't know उर्दू connotations के, attached कर दो. arrogant, Yep. So basically, if you arrogant attach को क्या कहते हैं उर्दू में? arrogant, I mean arrogant को कहते हैं. Oh my God, my Urdu is very bad. Okay, arrogant is Same. I uh think people will yeah, understand what I'm yeah, going to say yeah. here. So if I'm thinking कि अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं, खराब होते हैं, अपने आप गरूर को पता नहीं क्या गरूर समझते मगरूर हैं, होते हैं. Arrogant is मगरूर. गुरूर, हाँ गुरूर होते हैं, and I don't want to be that. So Yep, what is that? A block. yep. Deep down मेरे अंदर एक ये बिलीफ बैठी हुई है कि अच्छा, अगर अमीर लोग बुरे होते हैं तो मेरा अमीर बनना सही नहीं है, मैं Yep. फिर उस काम करती रहूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं I will go out there, I will try to make money, लेकिन something will keep me stuck. It मुझे will keep pushing वो, you back. Yeah. या वो somehow पैसा आ भी रहा होगा ना, मैं उसको ब्लॉक कर रही होंगी, क्योंकि मेरे अंदर ये एक basically चीज बैठी self हुई है defeating. कि Yeah. हाँ, कि सेफ नहीं है मेरे Yep. लिए, एक चीज सेफ नहीं है। और ऐसे ही हमारे बॉडी गोल्स जो होते हैं, हम लोग डाइट बदल लेते हैं, हम लोग जिम जाने लग जाते हैं, लेकिन एक तरीके से वो काम नहीं कर रही होती, या तो हम थोड़ी देर के लिए वेट लूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से डबल गेन कर लेते हैं। उसकी प्रॉब्लम यही है कि वो ब्लॉक्स हैं, आप सेफ नहीं फील कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग सेफ बीइंग योर हेल्दी वेट। कोई प्रॉब्लम, कोई वजह है जो आपके माइंड में बैठी हुई है, वो आपको बता रही है कि नहीं, हमारा जैसे हम हैं उसमें सेफ्टी है, उसमें हमारा रहना बेहतर है, Okay. दिमाग में ये चीज बैठी हुई है ना, तो उसकी वजह से फिर हम जब तक उसको हम पकड़ नहीं लेंगे ना, अच्छा ये बात है क्या जो मुझे ब्लॉक कर रही है, जब तक वो हमें ब्लॉक करती रहेगी। तो सेल्फ Perfect. अवेयरनेस इज half of the healing right there. That's what rapid Self-awareness. transformational It's therapy is. you've pinned the thing. Like it's self-awareness, right? So okay, Yeah. moving on. Let's talk about something that you mentioned early on. Okay, it's I guess it's very important Pakistani context. Um, eating disorders or how you because you said you're a Eating psychology coach. eating psychology coach as well, right? So tell me how eating leads to stress, eating more or eating less or eating like eating disproportionately. How does that lead to stress? Okay, so there are two things here. Stress can lead to more eating. So Okay. people do, Okay. Yeah. yeah. तो आप जब स्ट्रेस्ड होते हो, आप मूडी होते हो, बचपन से हमने ये एक चीज हमारे दिमाग में होती है कि जब छोटे होते थे हम लोग, when we were toddlers, when we were babies, तो रोते थे तो हमें फौरन मिल जाता था खाने को, and basically we were comforted by food. Yep. We were, हाँ, तो
and especially when the breast milk is fatty, it's very milky and yummy. That's why when we're stressed, we seek out those same type of foods जिसमें high fat content होता है, जिसमें Oh, वही interesting. same feeling of comfort आती है, क्योंकि it takes us back to when we were babies and जब our moms fed us, it was like warmth, it was like love, it was like connection, it was so many things. All our emotional needs were getting met as well as our physical needs. So sometimes हम लोग अपनी emotional needs को physically meet करने में लगे रहते हैं. But the fight Interesting. doesn't work out um, because we're not babies anymore. Yep. And yeah, so we start craving. उन लम्हों में जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो या बोर्ड होते हैं तो हम लोग ऐसी सॉल्टी और हाई फैटी चीजें हम सीक आउट करते हैं क्योंकि उसमें ना तो सिर्फ हमें कंफर्ट मिलता है but people who overeat एक तरीके से they're numbing out their feelings as well. It Right. helps them numb out. वही push away क्योंकि it's too painful, we can't deal with this. So that's where a lot of overeating comes from. And there's हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा overeating है कि मैं बता नहीं सकती. Everything is about food. पूरी दुनिया में everything is about food, लेकिन it surprises me how much we make things about food here. आप किसी के घर चले जाओ, it's all about food. Yep. Nobody wants to sit down and actually connect So emotionally, heart to heart. They connect through food. perfect. So, which Yeah, it is is a very bad, which important. is not. Assalamu alaikum and welcome everyone. I hope you're enjoying the show as much as I did when we discussed this with Hiba. And I hope this is a learning experience for you all as well. So, as you already know, Hiba talks about a lot of mental problems and how mental disorders are prevalent in our society and how they are stigmatized all over the place and how no one in our society is ready to admit that these problems exist. So, we try to uncover these facts and learn from Hiba as much as we can. However, as you can already see, we stopped in the middle there because I and Hiba myself decided to basically cut this episode into two parts because we've covered so much and the podcast went over time. And thus, this part that we've already discussed is there. And in the next part, she'll be talking in detail about how there is eating disorder and food addiction and then how it uh, affects a large part of Pakistani society, and we're too ignorant about it, and actually there is none to some discussion about this very topic in the society. So stay strapped as the next episode of this very podcast is going to drop soon. Stay blessed, Allah Hafiz, and hope to see you in the second part.